Hi everyone, this is Onya Makbul and today I'm representing Zai Systems SMC Private Limited. So I just wanted to come up with the introduction of the company. Zai Systems is a project and as well as the product-based company. Along with this, which I personally feel the major strength of the organization is that we are being providing a certified licensed IT training to the students and most preferably to the students of the computer sciences, but along with this we do appreciate these training programs to the non-tech students as well. So the major purpose and the motivation in order to introduce the certified licensed IT training summer courses in order to cover a gap between the academia and as well as between the market trends that are being currently following in the tech industry of the Pakistan. So in order to have a warm discussion or we can say that a wonderful feedback regarding our course content and regarding our the course content, we have one of a student who is currently being enrolled at Zai Systems SMC Private Limited. Assalamualaikum. Yes, how are you? Alhamdulillah, I'm also doing great. Yes, Amir, please tell me about yourself, a brief introduction of yourself. मैं BSc from UMT. तो मेरा CS चूज़ करने का मकसद ये था कि मैं अपने फादर से मोटिवेट काफ़ी था कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो इसलिए मैंने CS चूज़ किया. That's great. Alright, basically this is the motivation from your parent side, एक parental motivation है. Alright, that's great and I would love to see it as well. So just come to the point that you have been enrolled at Zai Systems as a training. So would you like to share your experience? जी, मैंने डेवलपमेंट का कोर्स लिया था Zai Systems से, तो वो बहुत अमेजिंग है. कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला उससे. That's great. मेरी कोडिंग स्किल्स काफ़ी बेहतर हो गई हैं पहले से. HTML, CSS, Java इन सब पे मैं काम किया और एक मंथ स्टैक का अच्छा डेवलपर हूँ मैं. That's great. Yeah, it's so amazed to see that at a very young age you are been working as a month-stack developer. So आपको क्या लगता है? What's that training plays a role in your career development? जी, मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है, वेबसाइट डेवलप करके देता हूँ और ये काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि हर कोई अपना ब्रांड लॉन्च करता है तो उसके लिए वेबसाइट चाहिए होती है. Exactly. तो वो काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए भी. मैं सबको सर्विसेज दे सकता हूँ कि ये वेबसाइट बना के देता हूँ, तो फाइनेंशियल इशू भी काफ़ी रिजॉल्व होता है. That's great. Alright, so I just wanted to ask a question because different other training institutes हैं जो कि provide trainings on the same content that Zai System is being providing. So what particularly you see in the organization that you choose it over the other organization? It's not wise to take the name, but ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने Zai System को चूज़ किया? मुझे वेब डेवलपमेंट का कोर्स CEO ऑफ Zai System अवैस अली खान ने करवाया. वो बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर उन्होंने अपना नाम बनाया कंपनी का Zai System. तो वो एक उसकी वजह से काफ़ी था कि एक प्रॉपर अच्छी कंपनी है, हार्ड वर्किंग खुद CEO करवा रहे हैं हमें, तो उसकी वजह से था माइंड के इस कंपनी से मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स करूँ. ओके, सो आपको क्या लगता है कि बिफोर बीइंग एनरोल्ड इन दिस ट्रेनिंग कोर्स तो क्या टेक्निकली फ्लॉज थे और क्या आपकी पर्सनैलिटीज़ में फ्लॉज थे जो कि वंस यू हैव बीन सक्सेसफुली completed the training course that you have successfully improved the flaws in the personality and as well as in the technical side? जी, जब यूनी में सिंपल कोर्सेज होते हैं, लेकिन जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है आउट ऑफ कोर्स मैंने चूज़ किया था तो वो काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि जो यूनी के स्टूडेंट हैं मेरे क्लास फेलोज वगैरह उनके लिए एक स्किल नहीं है ये, वो मेरे लिए एक ये स्किल सेट बना है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है. तो वो बड़ा हेल्पफुल रहा है. फ्रीलांसिंग शुरू की, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक प्रॉपर पोर्टफोलियो भी कह लें, एक्सपीरियंस कह लें जो गेन की है मैंने. लेकिन जो मेरे क्लास फेलो है वो सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, उनके पास इस तरह का कोई स्किल सेट नहीं है. वो एक्सपीरियंस के लिए भी कि डिग्री के बाद मैं जब बाहर जाऊँ तो वो एक एक्सपीरियंस गेन हो तो वो है मेरे लिए, तो वो एक काफ़ी हेल्पफुल है. Alright, that's great.
So आपको क्या लगता है अहमद that being enrolled in this training program, is it a wise decision for you? जी बिल्कुल है। इसमें एक प्रॉपर कह लीजिए आप वे है एक्सपीरियंस गेन करने का, और आप आगे बहुत एक चीज़ सीख रहे हैं, न्यू चीज़ सीख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। Alright, that's great. And first of all, thank you so much for your time. And let's conclude it in a way कि आप क्या रिव्यूज़ देते हैं about the company and as well as the training course. बहुत अच्छी कंपनी है, आई लाइक इट वेरी मच। बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकली भी काफ़ी कुछ सिखाती है ये कंपनी, तो आई लर्न इट। Alright, thank you so much.